Hello students, welcome back to my channel Lightup Knowledge and very warm welcome to today's video. In today's video, we are going to start with a new series, that is a mega MCQ grammar series which is for all competitive exam, and in today's video we'll start with MCQ on nouns. So this particular series will start on nouns, then we'll be proceeding. So I'll make a separate playlist of English grammar MCQs for all competitive exams. So now without any further ado or delay, let's get started. इन सारे क्वेश्चंस में बेसिकली आपको एरर फाइंड आउट करना है, और एरर फाइंड आउट करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसकी जगह आंसर क्या होगा, ठीक है। और ये जो सारे एमसीक्यूज़ हैं वो नाउन्स के एरर्स से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम टॉप ऑफ द बिल्डिंग लैपटॉप स्क्रीन स्टॉप्ड वर्किंग सडनली। सो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लैपटॉप स्क्रीन स्टॉप, ठीक है। जब हम पोजेशन की बात करते हैं और हम जब लिविंग बींग्स के पोजेशन की बात करते हैं तब हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, राइट, ना कि नॉन लिविंग थिंग्स की पोजेशन की। जब हम नॉन लिविंग के पोजेशन की बात करते हैं तब हमेशा हम ऑफ वाला पोजेशन लगाते हैं। सो देयरफॉर द लैपटॉप screen should be replaced with the screen of the laptop. So C is the correct answer. Question number 2 is, the owner of the store had seen one of the girl's dresses and decided to buy the same for her daughter. आपको इस सेंटेंस में नाउन का एरर निकालना है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द गर्ल्स ड्रेसेस, जब हम वन ऑफ की बात करते हैं, और जब हम पोजेशन की बात करते हैं वन ऑफ से लेकर, तब कभी भी अपॉस्ट्रोफी नहीं आता है। सो सी में एरर है। वन ऑफ द गर्ल्स ड्रेसेस की जगह क्या होना चाहिए, ड्रेस ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स, ड्रेस ऑफ वन ऑफ द गर्ल्स, ना कि वन ऑफ द गर्ल्स ड्रेसेस, बिकॉज द पोजेशन ऑफ the noun one of is never accompanied by apostrophe s. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। Sunil's and Wrinkle's house was renovated by their parents after their marriage. तो जब हम पोजेशन की बात करते हैं, जब हम दो लोगों के पोजेशन की बात करते हैं और वो दो लोगों का पोजेशन एक ही है, यानी कि सुनील और रिंकल का हाउस तो एक ही है ना, तो जो अपॉस्ट्रोफी होता है वो क्या होता है, लास्ट वाले नाउन पर लगता है, फर्स्ट वाले नाउन पर नहीं लगता है। तो जो हमारा एरर है वो ऑप्शन नंबर ए में है। सुनील्स एंड रिंकल्स की जगह क्या होगा, सुनील एंड रिंकल्स। सो देयरफॉर when two nouns are closely related, then the apostrophe is used only in the latter noun, only in the second noun or in the last noun. जब कोई चीज़ का पोजेशन एक ही होता है तब हम लास्ट वाले नाउन पर अपॉस्ट्रोफी ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 is, this brand new red car is not mine but it is somebody else. This brand new red car is not mine but it is somebody else. So look at option number D here. Okay, if you will closely observe this option, you will find that the word else, somebody else. So you here have to put an apostrophe to else, because you are showing the possession of that brand new red car, right? So instead of somebody else, the correct answer is somebody else's. You'll put apostrophe s to else, right, to make it correct. So एरर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। एल्स की जगह क्या आएगा, एल्सेस आएगा, क्योंकि हमें पोजेशन शो करना है ब्रांड न्यू कार का। क्वेश्चन नंबर 5 is, Shreya strongly disapproved of his son's idea of buying expensive bike amid financial crisis in the family. So in this particular question, if you closely observe option number B, son idea,
son ka idea, possessive noun, it's showing ownership of the son. Whose idea? Son's idea, right? So instead of son, the correct answer should be son's idea. So there should be apostrophe s, right? Son's idea. So option number B has an error, and instead of son idea, the answer should be of his son's idea. Okay, it should be apostrophe s. So therefore the error is in option number B. Question number 6 before you is, Shikha as well as his friend documents were not checked properly by the higher authorities. Shikha as well as his friend document were not checked properly by the authorities, right? So therefore here friend documents, right? So instead of friend, we have to show the possession of the documents, right? So therefore the correct answer should be friends, should be, right? So friends should be used in place of friend to show the possession of documents. So option number A is errorful. So instead of friend, the answer should be friends. There should be an apostrophe s. So option number A has error, and the right answer is friends. Let us have a look at question number 7. Kaushal always tells the same story to his sons, which is about maintaining unity of the brothers. Observe option number D, unity of the brothers. So for showing the possession of the unity of the brothers, two possessors are used, which is absolutely wrong, right? The first one is using of, and the second one is using brother plus apostrophe. So therefore instead of brothers, there should be brothers without apostrophe. So brothers, brothers should be used in place of brothers, that is apostrophe s, because the phrase of the already shows the possession. Since the possession is of the, will not use brothers apostrophe s. Option number D is correct. Question number 8 is, Rohan's cycle is however not so shiny and beautiful as Rahul. Rohan's cycle is however not so shiny and beautiful as Rahul. Look at option number D closely. So instead of Rahul, it should be Rahul's. So basically Rahul's should be used instead of Rahul because there is a comparison. यहाँ पर क्या हो रहा है? Comparison हो रहा है between cycles of two people, right? राहुल की साइकिल और रोहन की साइकिल. तो राहुल, जब हम राहुल की साइकिल की पोजेशन की बात करते हैं तो वहाँ भी अपोस्ट्रोफी एस आना चाहिए. सो देयर शुड बी एन अपोस्ट्रोफी एस that should be added to Rahul also. So there is an error in option number D, and the right answer is Rahul's, apostrophe s instead of Rahul, because we are showing the possession of the same. Let us have a look at question number 9. Informations from the road test will allow you to zero in on which the vehicles discussed above will be best for you. Informations from the road test. So option number A, if you look at option number A, you'll find that informations, right? So information is an uncountable noun, and with uncountable noun there is no plural form, right? So information should be used in place of informations. Since information is uncountable, as I told you, it is an uncountable noun, so hence we can make it countable and plural by adding pieces of information, right? तो हम कभी भी informations use नहीं कर सकते. अगर हमें plural शो करना है तो इसकी जगह हम क्या बोलेंगे? pieces of information, and informations नहीं होगा. Question number 10th is, my brief as a councillor is to safeguard the health, wealth and well-beings of the ward that I represent. So here look at option number C, wealth and well-beings. So here well-being should be used in place of well-beings, and the reason is when we use hyphenated nouns, so we always use them in singular form.
जब हम हाइफिनेटेड नाउन्स की बात करते हैं तब हम हमेशा उनको सिंगुलर फॉर्म में ही लिखते हैं, इसलिए वेल बींग्स नहीं होगा, वेल बींग होगा. सो देयर इज एरर इन ऑप्शन नंबर सी एंड द करेक्ट इज वेल बींग इंस्टेड ऑफ वेल बींग्स. So yes guys, that was all for today's video. I hope you enjoyed watching this video and you found it useful. If you did, please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press that bell icon so that you can get regular updates of the videos that I upload. Until then, keep learning and keep growing.